Hello students, I hope all of you are studying well and you are able to understand what I am trying to explain to you. Today, we are taking a very small and a very simple topic. We are continuing with the chapter communications, and right now what we are doing is perhaps something that is very practically useful to you, something that is of an important understanding for you, and something that will go a long way in you working in corporates or maybe having a big company of your own. These are channels of communication. The most common networks followed in organizations. You know how people communicate. अभी हमारे घर में is there any protocol that we follow के पप्पा मम्मी से बात करेंगे, मम्मी बच्चों से ही, बच्चे मम्मी से, मम्मी पापा से, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अलग कोड ऑफ कम्युनिकेशन है, या मुझे मेरे भाई से बात करना है तो ऐसे करना है. वी जस्ट टॉक टू whomever we want directly और वो सामने वाला भी डायरेक्टली आंसर करता है. नाउ इन अ कॉर्पोरेट or for that matter in any big organization, it is not possible कि कोई भी किसी से भी बात करता है और सब लोग सबसे बात करते हैं. Many a times there has to be a hierarchy of communication as well, where say for example if it is a peon, तो peon बात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से ही, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो एग्जीक्यूटिव को बोलेगा, एचआर वाले को बोलेगा. So basically he will address his problem only to a particular level of person, category of people. Like he will not directly go to the CEO and say कि अरे देखो ना ये फ्लश टैंक ठीक नहीं हो रहा है. Okay, obviously not. He will speak with the executive of the maintenance department or maybe his senior housekeeper या ऐसा कोई. Okay, in the world, in life, in fact, communications, it plays a very very important role. As I told you last time also, it is communication that makes a difference between people. So hence this particular aspect, this communication as a topic is put to you as an important learning in your CA foundation. Now when we are talking about communication, there has to be very clear instructions regarding who can talk to whom, who will ask whom, who will answer, who reports to whom, by when he will be reporting, what is the medium of communication that we are using, and so forth. Alright, that is why today we are doing this common networks followed in organization. कि हम लोग network क्या follow करते हैं, what are the various ways in which communication happens in an organization. Alright, so beginning with the first one is vertical communication or vertical network. I'm sure vertical, it is north south, so it is in this as well. Say for example we are talking about two category of people. One is supervisor, one is subordinate. Subordinate मतलब उसका junior है. Okay? तो ये communication कैसे होगा? Supervisor to subordinate, subordinate to supervisor. बहुत ही simple है ना, दो ही जन है तो मैं मेरे से तू और तेरे से मैं. This is how we communicate. Alright? Very simple. The second one, circuit network. Circuit network. You know what is a circuit, right? You may have studied this in 10th standard. वो series and parallel, क्या connection in series, connection in parallel, something like that, where circuit मतलब क्या पता है, ये पूरा एक गोल घूमना चाहिए. The cycle should complete. ऐसे for example अगर ये ऐसे हुआ, this is not connected to this circuit is not complete. Circuit मतलब क्या, point A से start हो रहा है, पूरा घूम के वापस इट इज कमिंग एंड टचिंग पॉइंट ए. आर यू गेटिंग इट? सो जहां पे भी ये वापस आके स्टॉप हो रहा है, दैट इज द एंड ऑफ द सर्किट. तो जहां से स्टार्ट होगा वहां पे ही खत्म होगा. इट्स लाइक अ राउंड मैराथन रेस और 100 मीटर्स कि स्टार्ट भी यहां से ही होगा लैप और यहां पे ही खत्म होगा. ओके, सो सी सर्किट नेटवर्क आल्सो प्रीटी मच वर्क्स लाइक दिस. से फॉर एग्जांपल द कम्युनिकेशन हैज टू हैपन बिटवीन ए एंड बी. A is sending some message to B. A ने B को कोई मैसेज भेजा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई रिपोर्ट ऑफ द सेल्स. ओके, ये पूरे वीक का सेल्स का ये मेरा रिपोर्ट है. ऑलराइट, B will be sending his or her feedback back to A. इसने मैसेज भेजा, से फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस इट इज सेल्स का रिपोर्ट. B ने ये रिपोर्ट स्टडी किया and he gave his feedback.
ये फीडबैक उसने वापस ए को दिया. See, this is the language that is used in our modern corporates. Okay, कितना भी सेल्स करो, you will get ये सब संस्कृत का श्लोक ही सुनने को मिलता है. Okay, so A ने मैसेज पास ऑन किया B को, B gave his feedback and this feedback finally reached A. So ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, A से B, B से वापस A. Okay, so it is called circuit network. Now what is the difference between the two? इसमें भी वही हुआ, supervisor to subordinate, subordinate to supervisor. In this process there were these things involved where ऐसा नहीं हो गया तू क्या कर रहा है, मैं चाय पी रहा हूं, खत्म. No, I will give you something to check and you will give your feedback regarding that, or you will send a feedback that I have accepted. Say for example if it is resignation. Okay, so A ने resignation बनाया, लेटर टाइप किया, B को सेंड किया. B will have to send a feedback that I accept your resignation, या तो I have received and I will think and revert back. ये मैसेज उसको जाना चाहिए. In corporates also, what happens is छोटा छोटा information, like for example, say the meeting is scheduled, the weekly meeting is scheduled on this Thursday at 8 p.m. This message is sent to all the executives, all the employees. Okay, employees are expected to revert back with noted thanks. उसमें समझ में आ ही गया है थर्सडे 8 बजे, स्टिल दे हैव टू रिप्लाई. व्हाई? सो दैट देयर इज अ क्लियर फीडबैक कि तूने ये रीड कर लिया, तेरे को समझ में आ गया, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन थर्सडे एट 8 o'clock. ऑलराइट, सो द सर्किट नेटवर्क वर्क्स वेयर देयर आर 2 people involved. Maybe it can be more people also, it can be 26 people also, it can be 100 people also, but it works in a chain with some like say for example sales report A ने B को भेजा, B ने C को, C ने D को, D ने E को, and then finally it comes back to A as a feedback कि ये final तुम्हारा feedback है. So this also is a circuit network. Basically the criteria of starting from one point and ending at the same point has to be met in circuit network. Alright, third, chain network. Now all of you must be knowing about this, I am very sure. chain marketing सब लोग ने सुना होगा. Like तुम्हारे जनरेशन में e-biz या e-buzz ऐसा कुछ है, समथिंग दैट हैज अ कंप्यूटर कोर्स, एंड मैं 2 जन को बनाऊंगा, वो और 2 जन को बनाएंगे, वो और 2 जन को बनाएंगे, मतलब मेंबर्स बनाएंगे. ओके, और कुछ नहीं बनाएंगे. तो चेन नेटवर्क वर्क्स लाइक दिस. ए ने बी को मैसेज दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की. ओके, सपोजिंग ये सीईओ है, तो सीईओ के नीचे ये आता है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसका जूनियर 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 जूनियर. So senior to junior is how the message will be passed. Remember in the earlier lecture we had done, there can be 2 ways of communication, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. ये वो ऊपर से नीचे वाला मैसेज है, where the CEO tells कि ये रूल अभी से फॉलो होने वाला है. Everyone will receive 50% salary only. So the CEO will not call up each and everyone, ये F को, C को, D को, G को, ये सभी लोगों को नहीं बोलेगा. CEO क्या करेगा? He will contact B and E. इनको बोल देगा कि सब में खबर फैला दो, पूरे गांव में खबर फैला दो, that you will be getting only 50% of your expected pay. Now C does not directly speak with A. C speaks with B or D speaks with C. So what has happened is the burden of communication on A is only as far as reaching E and reaching B. So उसको तो 2 ही जन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ओके, अभी ये सभी लोग समझो कि F, G, H, I जितने भी है, C, D, E, F, G जितने भी लोग हैं, whatever they want, say for example D has some feedback to give कि मुझे है ना एक पत्थर मारना है A के घर पे. So am I allowed or not? any kind of message that D wants to give, D will tell C. इसके नीचे समझो D के बाद E, F and so on. अभी E का D के पास आया, D का C के पास जाएगा, C B को देगा, B के पास पूरा कंपाइलेशन होगा कि C ने तो चलो कुछ, C ने ना कुछ नहीं बोला, D ने कुछ बोला, E ने कुछ बोला. So he will have all the feedback of D and E, and these feedbacks he will give to A if at all there is a need for it. एक जनरल कम्युनिकेशन. ये वाला चेन नेटवर्क तो कुछ भी नहीं है. चेन नेटवर्क में क्या है?
ए ने ई और बी को बोल दिया एंड दे विल पास ऑन द मैसेज टू देयर सबऑर्डिनेट्स, टू देयर जूनियर्स. ऑलराइट, कमिंग टू नंबर 4, wheel and spoke network. It is very, very important. See, this is the most common method that is followed in most corporates. Okay, wheel and spoke. ये थोड़ा दिख रहा है ना, ऐसा wheel जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा और डिजाइन बनाता हूं मैं. पता है ना, ऐसा व्हील होता है. व्हील, साइकिल का व्हील इमेजिन करो. साइकिल के व्हील में देयर आर अ लॉट ऑफ स्पोक्स. These are called spokes. ये बीच में ऐसा एक्सेल होता है, फिर ऐसा सब. All these salias, all these cars are called spokes. So wheel and spokes network. This, I repeat, is the most common way to communicate in the corporates of today. क्या होता है देखो. A is the boss. Okay, ये एक मेन बॉस है. अब ये क्या करता है, ये कुछ कमांड देता है बी को, या कुछ ऑर्डर्स देता है, या कुछ भी डिस्कस करता है बी को. बी विल रिवॉर्ड बैक टू हिम. फिर ये ए कमांड या ऑर्डर्स देता है सी को, सी वापस उसको रिवॉर्ड करता है. ए विल स्पीक विद जेड, जेड विल रिवॉर्ड बैक. A will speak with D, D will revert back. A will speak to Y, Y will revert back. A will revert to order to E, E will revert back. A will speak with F, F will revert back. A will speak with G, G will revert back. So, if you see, A is at the epicenter of this. A क्या है? He is at the epicenter of this entire system. See, I'll give you a very practical example. In a corporate, okay, so I'll talk about my class. Abhi hai na, I have my branches located at different places. Like, you know, I have one branch at Malad Nursing Lane में है, एक है महावीर नगर में है, एक है चंदावरकर रोड पे, एक है योगी नगर में, एक है ठाकुर विलेज, एंड एक है गोरेगांव. Okay, at the center of this is me. My name is Ronak, so R लिखा मैंने. Okay. Now what I have done is, ये हर एक सेंटर पे है ना, I have appointed हर एक ब्रांच का एक प्रिंसिपल है, the principal of that branch. What I do is, I'll give some orders regarding nursing lane to the principal of nursing lane and expect a feedback. Daily report हुआ, या portion completed कितना है, या how many new admissions have taken place, या तो whether the rent has been paid or not. एक पूरा सिस्टम है कि ये मैं नर्सिंग लेन के प्रिंसिपल को ही सिर्फ पूछूंगा और वो मुझे रिवर्ट करेगा. सेम वे आई डू दिस विद महावीर नगर का प्रिंसिपल, ही विल रिवर्ट बैक. चंदावरकर रोड का प्रिंसिपल, ही विल रिवर्ट बैक. योगी नगर का प्रिंसिपल, ही विल रिवर्ट बैक. ठाकुर विलेज का प्रिंसिपल, ही विल रिवर्ट बैक. गोरेगांव का प्रिंसिपल, ही विल रिवर्ट बैक. So what am I doing in this entire system? I'm at the epicenter. I have to deal with how many people? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फिर उनके नीचे दूसरे होंगे, like the principal of the nursing land branch. He will have all the subject teachers under him. So वो subject teachers को पूछेंगे कि आपका कौन से subject का कितना कितना portion हुआ है. He will make a complete report and he will send it across to me. Generally, this is the way a corporate functions, where one person is kept in many loops. ये क्या हुआ? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 loop हुआ ये. I am a part of 6 loops. So this will come back to me. This will come back to me. This will come back to me. So this loop वाला जो system है, where one person is at the center, he gives commands, takes feedback again, and so forth. This entire system is called wheel and spoke network. Okay. And the last one, in emergencies or at times of critical decisions to be taken, maybe there's a big change happening in the company, the star network is used.
स्टार नेटवर्क मतलब स्टार प्लस हॉटस्टार वो वाला नहीं, स्टार शेप में ये है इसलिए स्टार नेटवर्क है. इन दिस नेटवर्क A can speak to B can speak to A can speak to C can speak to A can speak to D can speak to A can speak to E can speak to A. ओके, अभी A का सब खत्म हो गया. नाउ B और A का तो हो गया. B can speak to C can speak to B can speak to D can speak to B can speak to E can speak to B और A का तो हो ही गया. C can speak to B हो गया, C can speak to D can speak to C can speak to E can speak to C. So if you see, it kind of comes across as a star. Hence the name star network. ये कभी होता है. Generally, this is the kind of method that is followed in a company which is newly established or it does not have a lot of employees. 5-6 जन ही है, तो हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं. मैं मार्केटिंग वाला हूं, कोई और सेल्स वाला है, कोई डिजाइनिंग है, कोई अकाउंट्स है, कोई कंप्यूटर है, कोई प्लानिंग है. तो हम सबको एक दूसरे का काम लगने वाला है. ओके, से फॉर एग्जांपल इन योर क्लास. सो इन योर क्लास देयर हैज टू बी वन पर्सन जो मे बी टाइपिंग करता होगा. देयर हैज टू बी वन पर्सन जो आईटी डिपार्टमेंट में होगा, गौरव सर जो है, who does the entire IT department का काम वो हैंडल कर दे. Me, I am handling the entire business communication, correspondence and reporting का subject. Then you have Vimal sir who is taking up maths. Then you have Piyush sir who is taking up many subjects. So all of us are expected to speak with each other in order to make this entire show happen. Okay? So Gaurav sir will speak with me. I will speak with Vimal sir के सर अभी ये कोई एक इको का ये सॉरी मैथ्स जैसा कोई सम आ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यू प्लीज हेल्प मी. पीयूष सर में कॉल मी कि ये एक पर्टिकुलर पार्ट था जो अभी नया ऐड किया है, सो यू विल हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट टू. तो ठीक है. देन आई मे कॉल पीयूष सर कि सर मेरे को ये एक पर्टिकुलर नया अकाउंट्स का कोई टॉपिक आ गया जो मुझे आता नहीं है, सो यू एक्सप्लेन इट टू मी सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. Then all of these may have to communicate with Gaurav sir. Then there can be some other person who is handling the entire administration. तो उनके साथ सबको so basically anyone can contact anyone and everyone has to contact everyone. Okay, so this is what the star network says. Okay, के जितने भी जन है, all of them are internally dependent on each other. Okay, so what they will do is they will speak with each other as and how required with a proper document कि मैंने तेरे को एक मेल किया था, अभी तू मेरे को मेल का रिवर्ट कर. ओके, ऐसा नहीं कि मैंने खाली फोन कर दिया देखो और हो गया, बिकॉज communication will require some proof and feedback. All right, quickly going through whatever we've done up to now. Communication, the kinds of networks, the common networks that are followed. First is the vertical network, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, generally happens verbally. Second is the circuit network, between two people only, but will involve some procedure. Third is chain, where one person tells both, like 2, 3, 4 people, and then they tell their subordinates. It is called top down. Okay. Fourth, wheel and spoke, where one person is in many loops, multiple loops, where he gives orders and takes feedback. And the last one, that is star network, where everyone speaks with everyone. Okay, so you can just pause the video over here, maybe go through the entire text, read it out, and if you don't understand, play the video yet again. We just continue the remaining part of the chapter in a few moments, maybe 10 minutes. In 10 minutes, I'll come back to you recording this. Thank you.